Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Dear students, today we are going to talk about properties of language. As you know, that in the previous lecture we talked about language. That what is language? How do we define language? So we gave different definition by different prominent linguists. Today we are going to talk about the properties of language. They are also called the characteristics of language or the features of language or the qualities of language. Fine. So there is actually a model which is called design features of human language, and this model was developed by Charles Hockett in 1960s. So according to this model, there are 13 properties of human language. Clear? And these 13 properties or characteristics or qualities of human language which distinguish the human language from animal language. Clear? That's why they are called the properties of human language. This lecture would be recorded in two parts. In the first part, we would talk about the first 5 properties of language, and in the second part then we would talk about rest of the 8 properties of language. Clear? So the first 5 properties of language, they are also called use properties of language. Why they are called use properties of language? Because George Yule, he has written these 5 properties in his famous book The Study of Language. So that's why some people call them use properties of language. इनको जो ये 5 पहले प्रॉपर्टीज़ हैं लैंग्वेज की, इनको यूज प्रॉपर्टीज़ ऑफ लैंग्वेज इसलिए कहते हैं कि जर्जूल ने अपने किताब द स्टडी ऑफ लैंग्वेज में सिर्फ ये 5 प्रॉपर्टीज़ ऑफ लैंग्वेज जिक्र किए हैं, इसलिए कुछ लोग इसको यूज प्रॉपर्टीज़ ऑफ लैंग्वेज कहते हैं. सो लेक्चर के पहले हिस्से में, पहले पार्ट में हम ये जो 5 प्रॉपर्टीज़ हैं इनके बारे में बात करेंगे, और फिर लेक्चर के दूसरे हिस्से में फिर बाकी 8 प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी बात करेंगे. सो लेट्स गो विद द प्रॉपर्टीज़ ऑफ लैंग्वेज. द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ लैंग्वेज इज़ दैट लैंग्वेज हैज़ डिस्प्लेसमेंट. ये लैंग्वेज की सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि लैंग्वेज में डिस्प्लेसमेंट होती है. ओके, सो वन कैन टॉक अबाउट सिचुएशन, प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट्स far removed from one's present surroundings and time. इस बात को आप समझें that 2 अल्फाज आप जहन में याद रखिए, now and here. Now and here. Now means the present time. Clear? So human language में हम सिर्फ मौजूदा सूरत हाल के बारे में नहीं, बल्कि we can talk about past, present and future. Clear? And here means yeah. So human language has this quality or this quality of displacement that we can not only talk about here, about the current position, the current place, rather we can talk about many other places which are far removed from here. Clear? कि यहाँ जो हम मौजूदा जिस जगह पर बैठे हैं, जहाँ पर हैं, इसके अलावा हम कई और जगहों के बारे में भी बात कर सकते हैं. For example, we can talk about America, we can talk about Europe, we can talk about Makkah, we can talk about Jannat, we can talk about hell. So these places are far removed from the current present surrounding and time. Clear? So this is called the property of displacement. We often talk about events that happened long ago and at a distant place. फॉर एग्ज़ाम्पल हम बहुत ज़्यादा चीज़ों के बारे में बात कर सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल हाउ पाकिस्तान केम इनटू बीइंग. पाकिस्तान कैसे वजूद में आया? सो इट हैपेंड इन 1947. क्लियर? ये 1947 में ये वाक़या हुआ. बहुत पुरानी बात है पास्ट के बारे में. ओके, सिमिलरली वी कैन टॉक अबाउट हाउ अमेरिका वाज डिस्कवर्ड, कि अमेरिका किस तरह डिस्कवर हुई. सो ये 600-700 साल पहले की बात है और बहुत दूर की बात है. ठीक है? सो वी कैन टॉक अबाउट दो सिचुएशंस. क्लियर? सिमिलरली वी कैन टॉक अबाउट जन्नत एंड दोज़ख. सो जन्नत एंड दोज़ख, दे आर नॉट हियर. Clear? But still we can talk about that. So human language has got this quality that we can talk
apart from now and here. Clear? Now, bees, of course, perform dances about a source of nectar that is also removed from the place of dance. But they cannot convey what happened in the previous season through this dance feature. क्लियर? अब जो बीज होते हैं, जो शहद की मक्खी जिसे हम कहते हैं, वो भी अपने डांस के ज़रिए बता सकते हैं, क्लियर, लेकिन वो सिर्फ एक मखसूस जगह के बारे में बता सकते हैं, वो पास्ट और फ्यूचर के बारे में नहीं बता सकते, और वो किसी और जगह के बारे में भी नहीं बता सकते, वो एक पर्टिकुलर एक इवेंट और एक हद तक एक बात कर सकते हैं, ठीक है. सो ह्यूमन बींग्स हाउएवर कैन नरेट इवेंट्स इन विच दे वर नॉट इन्वॉल्व्ड. हम इवन यहाँ तक बात कर सकते हैं कि हमने वो चीज़ें देखी ही नहीं. फॉर एग्जांपल, आई गिव यू द एग्जांपल ऑफ हाउ अमेरिका वाज डिस्कवर्ड. तो हमने सिर्फ ये बात सुनी है. हम जब अमेरिका डिस्कवर हो रही थी तो हम उस वक्त मौजूद नहीं थे. क्लियर? सिमिलरली हाउ मक्का वाज कॉन्कर्ड. पता है मक्का कैसे वाक़ई पज़ूर हुई, ठीक है. तो हम उस वक्त मौजूद नहीं थे, और वो यहाँ पाकिस्तान में भी नहीं है, वो तो सऊदी अरेबिया में है. तो जगह भी मुख्तलिफ है और टाइम भी मुख्तलिफ है. स्टिल वी कैन टॉक अबाउट दोस इवेंट्स. सो दिस इज़ कॉल्ड द प्रॉपर्टी ऑफ डिस्प्लेसमेंट. क्लियर? दिस वाज प्रॉपर्टी नंबर 1. नाउ property number 2, language is arbitrary. Language is arbitrary in the sense that there is no inherent relationship between the words of a language and their meaning or ideas conveyed by them. Clear? क्योंकि language जो है ना वो arbitrary है. इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो ऑब्जेक्ट होता है और जिसकी मीनिंग होती है, जो उसके साथ एसोसिएट होती है, उसके बीच कोई इनहेरेंट कोई लॉजिकल कनेक्शन नहीं है. क्लियर? There is no reason why a female adult human being be called a woman in English, औरत in Urdu, zin in Persian and female in French. ठीक है? हम औरत को इंग्लिश में वुमन क्यों कहते हैं, उर्दू में औरत क्यों कहते हैं, या पर्शियन में जिन क्यों कहते हैं, या फ्रेंच में फीमेल क्यों कहते हैं? दिस इज कॉल्ड द क्वालिटी और द प्रॉपर्टी ऑफ arbitrariness. क्लियर? हम डॉग को डॉग क्यों कहते हैं, हम मोबाइल को मोबाइल क्यों कहते हैं, हम टेबल को टेबल क्यों कहते हैं? ये जो चीज़ और इसके साथ जो मतलब और मानी जुड़ी होती है, इसके बीच कोई इनहेरेंट रिलेशनशिप, कोई लॉजिकल रिलेशनशिप नहीं है. ठीक है? बस जिसने एक नाम दे दिया तो वो एक कन्वेंशन बन गया. ठीक है? अब हर किसी का अलग नाम है. फॉर एग्जांपल, अ चाइल्ड इज़ बोर्न एंड ही इज़ गिवन अ नेम. एक बच्चा पैदा होता है और उसको एक नाम दिया जाता है, तो फिर वो नाम उसके साथ जुड़ जाता है, और बस वो उसका नाम मरते दम तक भी उसका वो नाम होता है. ठीक है? सो इट बिकम्स अ कन्वेंशन. सो दिस इज कॉल्ड द प्रॉपर्टी ऑफ आर्बिट्रेरीनेस. क्लियर? कि जो चीज़ ऑब्जेक्ट होती है उसको जो नाम दिया जाता है तो वो एक रिवायत बन जाती है, एक कन्वेंशन बन जाता है. उसके कोई लॉजिकल कनेक्शन, कोई इनहेरेंट कनेक्शन, कोई रिलेशन नहीं होता कि इसको ये नाम क्यों दिया गया है. ठीक है? अगर इस तरह नहीं होता, सो इट मे बी नोटेड दैट हैड लैंग्वेज नॉट बीन आर्बिट्ररी देयर वुड हैव ओनली वन लैंग्वेज इन द वर्ल्ड. अगर इस तरह नहीं होता तो फिर पूरी दुनिया में सिर्फ एक ज़बान होती. ठीक है? फिर जितनी चीज़ें होती हर चीज़ का एक अलग अलग नाम होता, और पूरी दुनिया में, पूरी कायनात में फिर सब लोग उसको उसी नाम से, उसी चीज़ से पुकारते, और फिर पूरी दुनिया में एक ज़बान होती. लेकिन इस तरह नहीं है. हर एक सोसाइटी में लोग जो है ना वो मुख्तलिफ़ चीज़ों को मुख्तलिफ़ चीज़ों के नाम से पुकारते हैं, मुख्तलिफ़ नाम दे देते हैं, और फिर वो एक रिवायत बन जाती है, एक कन्वेंशन बन जाती है. और इसी तरह दुनिया में मुख्तलिफ़ ज़बानें, मुख्तलिफ़ लैंग्वेजेस हैं. सो दिस इज़ क्वालिटी नंबर 2 और प्रॉपर्टी नंबर 2, दैट लैंग्वेज इज़ आर्बिट्ररी. Now, property number 3, language has duality. Now, what does it mean? The language that human beings use consists of two subsystems. And what are those two subsystems? They are sound and meaning. A finite set of sound units can be grouped and regrouped into units of meaning. These can be grouped and regrouped to generate further functional constituents of the higher hierarchical order. We can produce sentences through this process of combining units of a different order. क्लियर? तो ये इसका क्या मतलब है कि लैंग्वेज हैज़ अ डुअलिटी. इसका ये मतलब है कि जो एक दो सब सिस्टम्स है, साउंड्स एंड मीनिंग्स. सो ये साउंड्स जो है ना, ये हम मुख्तलिफ पैटर्न्स में इसको
जोड़ते हैं, इसको कंबाइन करते हैं और फिर वही सेम साउंड जो है ना वो एक अलग कम्बिनेशन में फिर आते हैं और उसका मतलब फिर अलग होता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल देयर इज़ अ वर्ड एट, ATE, ठीक है, एट, ठीक है। तो ये एट, A, A, T, A, ये तीन साउंड्स हैं, तो इसका मतलब है एट, खाना खाया, ठीक है। अब इसको हम इन साउंड्स को एक और ग्रुप में भी कंबाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सैट, SAT, सैट। सो सैट इसका एक अलग मतलब हुआ, उसमें भी वही साउंड्स आए हैं, ठीक है। इसी तरह ये जितने भी साउंड्स हैं इनको हम ग्रुप करते हैं, ग्रुपिंग करते हैं और फिर रीग्रुप करते हैं और फिर उसको उससे अल्फाज बनते हैं, अल्फाज को हम कंबाइन करते हैं और फिर एक और सेंटेंस बन जाता है। फॉर एग्जांपल इफ़ आई से आई एट मील, मैंने खाना खाया, ठीक है। फिर मैं ये एक सीक्वेंस बन गया, आई एट द मील, फिर आई एट बनानास, तो फिर मील की जगह मैंने बनाना रख दिया, एक और सबसेट, एक और री ग्रुप किया इन अल्फाज को और एक नया मतलब इससे बन गया। सो दिस इज कॉल्ड द प्रॉपर्टी ऑफ डुअलिटी, ठीक है, कि ये डुअल सिस्टम है। साउंड्स को हम कंबाइन करते हैं, फिर वो अल्फाज बन जाते हैं, अल्फाज को हम ग्रुप करते हैं और इसी तरह इसके मीनिंग्स और मतलब जो है ना वो चेंज होते रहते हैं। नाउ एनिमल्स कॉल्स डू नॉट शो सच डुअलिटी। एनिमल लैंग्वेज में इस तरह डुअलिटी नहीं होती, दे आर यूनिटरी। उनका एनिमल का जो लैंग्वेज है वो यूनिटरी सिस्टम है, वो डुअल सिस्टम नहीं है, ठीक है। सो दिस वाज क्वालिटी नंबर 3, दैट लैंग्वेज हैज डुअलिटी। Now property number 4, language has a productivity. What does it mean? It means that a speaker may say something that he has never said before and be understood without difficulty. Man uses the limited linguistic resources in order to produce completely novel ideas and utterances. ठीक है। इंसान जो है ना ह्यूमन लैंग्वेज में ये प्रॉपर्टी है, ये क्वालिटी मौजूद है कि हम कई दफ़ा बहुत सारी चीज़ों के बारे में बातचीत करते हैं कि वो हमने पहले ना सुना हो या शायद देखा भी ना हो, दैट स्टिल वी कैन टॉक अबाउट दोज थिंग्स। फॉर एग्जांपल मैंने आप लोगों को एग्जांपल दे दिया ना, दैट हाउ मक्का वाज कॉन्कर्ड, कि पता है मक्का कैसे वक्त पजीर हुई, ठीक है। तो वी हैव नेवर सीन हाउ पता मक्का टुक प्लेस, ठीक है। हमने इस कभी देखा भी नहीं, बट स्टिल वी कैन टॉक अबाउट दैट, हाउ अमेरिका वाज डिस्कवर्ड, हाउ पाकिस्तान केम इनटू बीइंग, क्लियर। सो ये इन चीज़ों के हमने कभी देखा भी नहीं, या हम कई इस तरह के बातचीत करते हैं, इस तरह के जुमले बोल लेते हैं कि वो पहले मौजूद ही नहीं थे, ठीक है। इसी तरह फॉर एग्जांपल ये फेरी टेल्स, एनिमल फेबल्स, नरेटिव अबाउट एलियन अनहर्ड ऑफ हैपनिंग इन डिस्टेंट गैलेक्सीज और नॉन एग्जिस्टेंट वर्ड्स और परफेक्टली अंडरस्टूड बाय द लिसनर्स। हम कई चीज़ों के बारे में बात करते हैं तो हमने उनको पहले न कभी सुना होता है न कभी देखा होता है, पर स्टिल वी अंडरस्टैंड दैट, हम उनको उनकी समझ आती है। और ये लैंग्वेज की वो ये कमाल है कि हम ये इसको समझते हैं, ठीक है। हम बोल भी सकते हैं और समझ भी सकते हैं। तो दिस इज़ कॉल्ड प्रोडक्टिविटी। समटाइम्स इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड क्रिएटिविटी, क्योंकि हम बहुत से नई चीज़ों को क्रिएट करते हैं, इसको क्रिएटिविटी भी कहते हैं। सो दिस इज़ क्वालिटी नंबर 4, लैंग्वेज हैज़ प्रोडक्टिविटी, क्लियर। Now the next one is property number 5, cultural transmission. So cultural transmission means that each generation needs to learn the system of communication from the preceding generation. One generation learns language from the previous generation and thus the language is transmitted from ages. क्लियर। हम इस तरह करते हैं कि हमने ये ज़बान कहाँ से सीखी, हमने अपने बड़ों से सीखी, और हमारे बड़ों ने किस तरह उन्होंने अपने बड़ों से ये ज़बान सीखी। तो ये इसी तरह एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन और दूसरी जनरेशन से तीसरी जनरेशन, और इस तरह ये एक सिलसिला जो है ना ये कई सालों से ये चलता आ रहा है, ठीक है। सो इट इज़ क्लियर दैट ह्यूमंस आर बोर्न विद सम काइंड ऑफ predisposition to acquire language in general sense. However, we are not born with the ability to produce utterances in a specific language such as English. We acquire our first language as
चिल्ड्रन इन अ कल्चर। ठीक है, हम जिस जिस कल्चर में पैदा होते हैं वही ज़बान सीखते हैं। ठीक, फॉर एग्जांपल वी आर बोर्न हियर इन पाकिस्तान इन पख्तूनख्वा, सो दैट्स व्हाई वी स्पीक पश्तो, क्योंकि हमारे जो बड़े, हमारे जो पेरेंट्स हैं, हमारे जो इर्द गिर्द लोग रहते हैं वो पठान हैं, वो पख्तून हैं। दैट्स वाई we have acquired Pashto language. Now those people who are born in Punjab, so of course they would speak Punjabi, क्योंकि उनके पेरेंट्स और उनके जो इर्द गिर्द लोग हैं वो पंजाबी बोलते थे। ठीक है, इस तरह दोज पीपल who were born in England, so of course they would speak English. तो जिस सोसाइटी में, जिस माशरे में ये एक कल्चर के साथ जुड़ी हुई थी कि बंदा जिस माशरे में, जिस कल्चर में पैदा होता है तो वही ज़बान सीखता है और फिर वही ज़बान में वो आगे बातचीत और कम्युनिकेशन करता है। सो दीज आर द first 5 properties of human language which are called use properties of language। कुछ लोग इसको use properties ले कहते हैं कि यूल ने इसको अपनी किताब में दर्ज की। ठीक है, so this was part 1 of this lecture. In part 2 of this lecture then we would talk about the rest of 8 properties of human language. ठीक है, till then thank you very much.